Namaste and thank you for watching this edition of The Right Stand. And this evening, ladies and gentlemen, it's one straight debate is the issue of illegals. Illegals who are now not just illegally entering our country, but they are using the equations between India and Nepal to their personal benefit. And this poses a huge internal security problem. CNN News 18 decided to go on ground and investigate how deep the rot runs when the issue emerged from Simanchal and Bihar, when the issue of school holidays being shifted to Friday from Sunday because of the existence or a claim that the local population's demographics has changed. Quite startling and surprising that this is a practice that had been going on for a few years like an unwritten law, despite no official notification from the state government of Bihar itself. What was found on ground as Anvit Srivastava went down to investigate is shocking, ladies and gentlemen. No man's land, that means that parcel of land where there should be no man, and this entire 729-kilometer stretch, it's a linear stretch between Bihar and Nepal, 2 kilometers on either side, finds itself totally inhabited and crowded. These visuals that you're seeing on the screen are from this no man's land in Bihar, at the Bihar-Nepal border, India-Nepal border in Bihar. But the larger question is, who has allowed them to occupy this place? And who are these people? You will be shocked to know that they are not Nepali citizens, they are not Indian citizens. They are largely people who are neither Indian nor Nepali. They hail from the Rakhine state as Rohingyas, or they are Bangladeshis. How did they get here? How did they occupy this space and encroach? How are they illegally able to enter our country and then legalize themselves? That's the in-depth investigation. At a time where we are grappling as a nation with 4 crore illegals on our soil, can we allow our borders to become a place where these illegals are breeding and attempting to change the demographics of that particular state in that particular area, this time namely the Simanchal region? This is the entire in-depth, deep dive investigation to the challenges we face as a nation with what is happening on ground in Bihar. The Indo-Nepal border, thickly populated colonies which on paper are demarcated no man's land. The first signs of a growing population. The signs would not have been so ominous if census figures for the state of Bihar and on-ground evidence about rise in Muslim population were not so contradictory. Agencies are worried these are signs of not just illegal immigration, but also a contribution to rising radicalism in Bihar. The 7 districts, Madhepura, Katiyar, Saharsa, Kishanganj, Araria, Supaul and Purnia in Bihar form Simanchal that runs parallel to the Indo-Nepal border. The belt has recently witnessed a dramatic demographic shift that not only reflects the decades of ongoing vote bank politics, but has also widened the scope for illegal activities along India's international border, if not acts of terror alone. Araria, Madhepur, Saharsa, Katiyar, Kishanganj, Supaul and Purnia. These 7 districts in northeastern part of Bihar form a sub-region popularly known as Simanchal. As you can see the board behind me, we are headed towards Simanchal. Why? Because recently this region has witnessed a dramatic demographic shift. But why is it our concern? Because security agencies believe that most of the people who are living here are not even Indians. Majority of them are either Bangladeshis, Rohingyas, Nepalese, or have come in from elsewhere, sneaked into Indian borders, have got their fake documents made and are living there. Time to time, agencies say that they also indulge in criminal activities, which eventually cause a threat to the national security as well. But who are these people? Who are the people who are giving them shelters? Who are those who are providing them logistical support? We are here to find all the answers to these questions. We are here to find the ground reality. मैं मानता हूं
कि पाकिस्तान की तुलना में, पाकिस्तान से तो आतंकवादी आते हैं, लेकिन ये डेमोग्राफिक चेंज करने के लिए ये हमारे लिए दुश्मन नंबर 1 है बांग्लादेश। बांग्लादेश से लोग आते हैं, वो आके और यहाँ हमारी पूरी डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं। Indian government census data shows that since 1961 to 2011, total population growth recorded by Bihar was 198.71%. The data also shows that in these 5 decades, the growth of the Hindu population was 185.9% and the growth of the Muslim population was 273.81%. The concern here is that experts and security agencies suspect that a majority of these people are not Indian Muslims but Bangladeshis and likely Rohingyas too. Security agencies say these illegal immigrants are able to get fake documents which integrate them with existing families, making it difficult to pinpoint and crack down. One of the major reasons for the dramatic demographic shift in the Simanchal area is that it runs parallel to the Indo-Nepal border. I'm right now standing on a road that lies in India, but on my left is the no man's land, which you can see is quite heavily inhabited, and across which lies Nepal. After talking to officials in several agencies, be it the IB or paramilitary forces deployed in the area, local police or officers from the anti-human trafficking units or anti-terror units, we have managed to crack the basic modus operandi. Groups of Bangladeshi men, often accompanied by Rohingyas, board a vehicle from Indo-Bangladesh border, mostly near Siliguri, which drops them off at the Indo-Nepal border. The game actually begins there. These men then take a U-turn and enter India via porous borders of Nepal and India in Bihar, mostly in Araria, Kishanganj, Supol and Raxaul. Once here, they settle in settlements like you can see behind me, temporary settlements which with time take shape of pakka houses. If intelligence agencies and police are to be believed, these colonies and these settlements also often become breeding grounds and training camps for the radical groups like PFI and other groups which hunt on these people due to their poor economic conditions and given vulnerability. जिसके पास ज़्यादा सामान है उसको हम चेक करते हैं और वैसे भी जब ज़्यादा भीड़ होती है तो इनको डीपली हम चेक नहीं कर सकते, पर जिस पर डाउट होता हम उसको रोक करके चेक करते हैं। जो आदमी खाली हाथ आ रहा है, औरत जो खाली हाथ आ रहे हैं, वो नेपाल से इंडिया आ भी सकते हैं और इंडिया से नेपाल जा भी सकते हैं खाली हाथ। हाँ, ये हमारी ट्रीटी है, इंडिया नेपाल की ट्रीटी है और इसके अंतर्गत हम इनको आने जाने देते हैं। इंडिया और नेपाल की जो इंडियन पॉलिसी है वो रोटी बेटी का रिश्ता है, इसका ये लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। बहुत सारी ओपन यहाँ पे बॉर्डर है जहाँ पे बस आप एक चहलकदमी करके आप इस पार से उस पार हो जाते हैं और ना ही उस तरह से वहाँ पे एजेंसी हो या एसएसबी के जवान हो या नेपाल पुलिस से की ज़्यादा पूछताछ आपसे करती है कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो। ऐसा है नहीं, इसीलिए ये लोग कुछ ज़्यादा ही संख्या में बॉर्डर टप के बिहार आ जाते हैं। But how did these settlements, which house thousands, go unnoticed for decades? Political experts, researchers, academicians and local social activists say it has been possible only because of the political patronage that these groups enjoy as a probable vote bank. जैसे लालू प्रसाद जी आते हैं 91 से 2001 में ये 35.48 हो रहा है, 35.48 ये मुस्लिम पॉपुलेशन अचानक वृद्धि हो गई। और उसके बाद 2001 से जिसमें नीतीश जी भी है शामिल, उसमें भले राष्ट्रीय स्तर पर 24% का ग्रोथ हुआ है मुस्लिम, लेकिन बिहार में ये 27.95 यानी 28% ग्रोथ है। I'm right now in Nepal and as I walk forward, I've now entered India. Across 1700 kilometers of Indo-Nepal border that spans across Bihar, Uttar Pradesh and Uttarakhand, there are 26 authorized trade routes through which Indians and Nepalese can walk freely in and out in the two countries. But if we talk about the third country nationals, they have to report at the integrated checkposts. Out of 7 sanctioned integrated checkposts, 2 of them are active in Bihar itself. The role of these checkposts are that whenever a third country national enters India, he is examined by the officials of the immigration, customs and other departments including the IB. But if we talk about the ground reality of Rohingyas and Bangladeshis, the reality is much different. A majority of these illegal migrants are scrap collectors, transporting tons of scrap to makeshift godowns in villages in the Simanchal area along the Indo-Nepal border.
The rising numbers of these godowns, housing quintals of unchecked and illegally transported scrap, has become a concern for security agencies. Our team went undercover to visit one of these scrap godowns and interacted with the labourers there. The interaction only unveils the magnitude of the threat which these porous borders possess. ये बासमती है, ये क्या कहते हैं, बेले से सब उठाते हैं क्या? क्या? ये सब बेले में मिल जाता है ना? तब कहाँ मिलेगा? नेपाल से लेके चल आते हैं, रोकता नहीं है सर। भंसार काटना पड़ता है। कहाँ फिक्स लगता है? भंसार तो अपना लोग का नहीं ना है, बेला बासमतिया में भंसार चालू नहीं ना है। अंदर जो जाता है ना, हाँ, भंसार लगता है। साइकिल का भंसार लेता है। साइकिल का भंसार नेपाल पुलिस लेता है। यहाँ लोकी वाला, यहाँ पे छोटी सी भंसार है ना। और फिर उधर से जब कचरा लेके आते हैं कबारा तो नहीं रोकता है ना, आने का रुकता नहीं, खाली बड़ा सामान आने में देता है। कैसे आप लोग एसएसबी के सामने में चल जाते हैं? एसएसबी सब परेशान नहीं करता है, नेपाल ये पुलिस परेशान करता हुआ है। वो यहीं पर परेशान करता है, उसके बाद जो है ना कबाड़ी वाला को कहीं नहीं रुकेगा। महीना लेता होगा ना? महीना दे रहे हैं, महीना लेता होगा ना, तब ना नहीं टोकता है। महीना देता है, उसके बाद जो है महीना समझते हैं, हफ्ता हाँ, हफ्ता जो खाद वाला, हाँ, जैसे खाद वाला वही उसी टाइप से लोग नेपालो पुलिस को देते हैं, एसएसबी को। नेपाल पुलिस ऑफिस है, ये भंसार जो है बॉर्डर के उस साइड नेपाल में है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शकीम। Last month, Nepal's armed police force arrested 15 men and recovered from them 2 kilograms of uranium-like chemical, which was to be sneaked into India illegally via Jogbani that lies in Araria at the international Indo-Nepal border. Even though Indian intelligence agencies are yet to link any of these arrested men with a terror group, but what has become their recent concern is the rising number of such scrap go-downs along the international Indo-Nepal border, particularly in the Simanchal area. When we spoke to some of these scrap dealers off camera, they told us that they bring all of this junk from Nepal and sell it into India. They said they bring it either in the late hours of the night or by paying security agencies on the either sides. खास करके यह क्षेत्र जो है नेपाल और इंडिया का एकदम ओपन सीमावर्ती क्षेत्र है। जब एक पाँव आप जब चाहे नेपाल में दे सकते हैं, एक पाँव जब चाहे इंडिया में दे सकते हैं। और आए दिन पढ़ाए यहाँ पे कभी गांजा तस्करी के रूप में पकड़े जाना, तो कभी जो है अननोन पर्सन के द्वारा पकड़े जाना, कभी ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इस कुछ दिन पहले हमने कुछ लड़कियों को, विदेशी लड़कियाँ भी यहाँ पकड़ी गई हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो भारत के जो भी जाँच एजेंसियाँ हैं, चाहे जो भी हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट को हो, उनको इस क्षेत्र में गहन जांच करके अगर वैसे लोग यहाँ हैं उनको चिन्हित करके उसके ऊपर कार्रवाई करने की आवश्यकता है ताकि यह क्षेत्र सुरक्षित रहे। We are at Bela Gram Panchayat in Araria, and just 300 meters away from here is Indo-Nepal International Border. Close to me here, close by, is a settlement which is dominated mostly by Bangladeshi Muslims. When we spoke to them, many of them told us that they had been living here for decades. But as far as security agencies are concerned, they suspect that these men have been giving refuge to those who continue to come into India via Nepal from Bangladesh and indulge into criminal activities, if not alone terror activities. So much so that these people also allow them to enter their own existing family trees by getting made fake documents like Aadhaar, voter ID, ration card and other documents. For some, these people are vote banks and enjoy political patronage as these settlements are growing day by day. For some, they are just cheap laborers, while some believe that these settlements are a breeding ground for terror activities. Only in time to come we'll see if these settlements witness any such crackdown by the police or any agencies, or they only continue to grow. From Bela, near Indo-Nepal International Border, with video journalist Arjun Singh, this is Anvit Shrivastava in a special report for CNN News 18. The investigation continues, ladies and gentlemen, but Anvit is live with us. Anvit, the biggest threat, 1, illegals, 2, demographic change, 3, what are they bringing in from Nepal? And 4, is this also a hotbed, a haven for terrorists?
Yes, see, starting with one, like you said, illegal immigrants, and when we visited these areas at the border, and particularly at the no man's land, which lies between India and international India and Nepal border, we saw that this no man's land, which is supposed to be vacated, and both the agencies need to keep eye on them, security agencies in both the countries. But we found that this no man's land was quite heavily inhabited. People are living there. These are mostly people who are working there as laborers, mostly who go to houses and work as domestic help or pull carts and do such jobs. Also, what important to note here is that all these people, they are lakhs in numbers, because 729 kilometers is the area that Bihar shares with Nepal, and entire Simanchal area is heavily inhabited by these people who are said to be not Indian Muslims but Bangladeshis, Rohingyas, Nepalese and other people who have come in from elsewhere and have settled here illegally. These people, many of them do not have documents, many of them get their documents made, eventually they settle in these clusters. Then the modus operandi is that they get pakka houses, then these men marry local women. They get documents made in such a way that they seed into existing families' tree, and then they become unidentifiable for security agencies. Coming to point number 2, Anand, as you mentioned, how are they a security threat? Because these people, security agencies say, are not Indians. Majority of them are not Indians, and many of them also do not have documents. Now they are being looked upon as ghost residents, who you cannot identify. Whenever they indulge into any criminal activity, not alone in Bihar, but we have seen how Bangladeshis have been arrested time and again in Delhi, in other states also, and Rohingyas too. Last year only Special Cell of Delhi Police had filed a charge sheet against one Rohingya. He was found living in Devband in a mosque where he had been given refuge. So these people get fake documents made, which has been proven time and again. And coming to the third point, that what is the biggest threat is that along the border we visited many scrap godowns, and along the border in particularly Simanchal area there are many scrap godowns, makeshift scrap godowns, and this tons of scrap that is scaling border every day illegally. We spoke to some of them off camera and they told us that they either pay local authorities, they said that they either bring this scrap in dark late night in the dark hours, or they pay local authorities to allow them get in, and so much tons and kilos of scrap that is coming in. It is all stashed at the border area. It is then sold into India. But just last month, 2 kgs of uranium-like substance was recovered. 15 men were arrested by Nepali police. Even though Indian agencies are looking into it, but they have not been able to associate. No, and what is the guarantee that these establishments have got any legal papers or documents? How is it that you have such pakka place which is in land? Does it actually belong to them, and who's ratified these lands? And the numbers are startling. The demographic shift is a big issue. Anvit, great job done on ground. Ladies and gentlemen, let's dive into the debate and the question that we are asking. This big demographic shift. Now, are we going to wake up as a nation, or are we going to continue to be in slumber? Because this is census data only till 2011. The last 11 years, we don't even know what has happened on ground and what the reality is. And perhaps it could shock us out of our wits if we actually see the number. We don't have the number. We've got our guest this evening. Quickly going across to our guest, the Bihar-Nepal Border Intrusion, a scary reality, is a CNN News 18 investigation. Danger at border is the hashtag, and we'll continue to track issues that matter to India. This is a matter of internal security. It is a matter that we cannot have parasites, nearly 4 crore of them across our country. That's what estimates suggest. Breeding, feeding off India without having legal permit to live here. Now, there are multiple allegations, but I'm going to say namaste to all our guests. Tuhin Sinha, spokesperson of the BJP, Khalid Anwar, JDU MLC is with us, PK Mishra, former ADG BSF with us, Harendra Pratap, census researcher, and Avinash Kanodia, social activist. Aap sabko mera namaste. And before I open up with the discussions and get everybody, let's try and get the demographic shift. You will be startled in terms of the numbers and the details, ladies and gentlemen. This demographic shift, there is a huge surge in Muslim population due to illegal migration. The numbers have gone by more than 350% in some of the districts. Now, what is also happening is Nepal is pushing 90% of the Nepali Muslims towards this Madheshi Terai region. But along with the Nepalis, there are also huge number of Bangladeshi and Rohingya. In the last 2 years itself, 694 madrasas and mosques have been set up in the last 2 years in this region, which is supposed to be no man's land. Rohingyas have been brought in via the Nepal border and been made to settle here. How? Via fake Aadhaar cards that have been made and they have been distributed. And this also came to light in a recent investigation. Arunima has got these inputs from our IB and SSB sources.
illegals declared as legal because the local families who are already staying there are paid money or influenced to consider males or members 17-18 year olds as part of their family. ये कह के कि ये चाचा के घर गया था या इधर गया था 4 साल का वापस आया इसको लीगलाइज करा दीजिए and then their Aadhaar cards are made. Weeding out illegal immigrants very difficult because you ask them a question and they will say I am from Araria, I am from Purnia, I am from here, despite clearly knowing very well that they are not Indians. Groups like PFI are helping immigrants gain influence. They are getting political patronage and perhaps a certain level of currency because they've now become a vote bank. This is the big CNN News 18 investigation and I'm going to start straight with Harendra Pratap ji, who's a census researcher. Harendra ji, आपकी बात मैंने सुनी, आपके पास आंकड़े हैं और आप कह रहे हैं कि 1961-71 से लेकर 2011 तक में बहुत ज्यादा हुआ है. 2011 से 2022 में क्या क्या हुआ ये तो किसी को पता भी नहीं है क्योंकि आंकड़े ही नहीं है. हाँ, आंकड़े तो आने हैं. देखिए, हम लोगों को ध्यान देना चाहिए. एक पुस्तक आई थी जुल्फिकार अली भुट्टो की मीथ ऑफ इंडिपेंडेंस. उसके अंदर लिखा ओरिजिन ऑफ डिस्प्यूट विथ इंडिया. इस पुस्तक में उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा था कि पूर्वी पाकिस्तान को जो जमीन मिलनी चाहिए थी नहीं मिली और इसलिए वो बड़े योजनाबद्ध तरीके से पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है और पाकिस्तान इस दोनों को जोड़ने के लिए एक गलियारा बना रहे. पहला बिहार में एंट्री होता है 1961 में. आपके पास मैंने फिगर दिया है, सेंसस का फिगर है. किशनगंज ब्लॉक हिंदू बाहुल्य था जी. उस किशन देश भर में मुस्लिम आबादी लगभग 3.5% बढ़ी है. 10.7 से बढ़कर के और 14.22% है. लेकिन इस किशन के खंड के अंतर्गत इसको मुस्लिम बहुल बनाने के लिए ये 61 से 2011 के बीच में 14.19% मुस्लिम आबादी बढ़ी है. क्या ये भारतीय मुसलमानों की जनसंख्या है? बिल्कुल नहीं है. उसी तरह पोटिया में 9.42% बढ़ी है. दिघलबैंक में 8.44% बढ़ी है. अररिया के अंदर नरपतगंज में 8.58, अररिया प्रॉपर के अंदर 7.06. उसी तरह बारसोई जहां से हिंदू प्लान हुआ है, बारसोई से 16.33, कोढ़ा से 11.34. मेरे पास ब्लॉक वाइज है. और आप ध्यान रखिए, अभी न्यूज आ गया कि इस कटिहार और किशनगंज के स्कूलों में अब रविवार को छुट्टी नहीं होती है, फ्राइडे को छुट्टी होती है. वो पेपर में आ चुका है यहाँ पर जी. हमने भी यहाँ स्टोरी की है, पड़ताल भी की है और ये झारखंड में भी हो रहा है. हम वही बता रहे हैं ना. मेरी तो पूरी इसी तरह बिहार का एक पोर्शन था साहेबगंज, जिसको संथाल परगना जिसको आप साहेबगंज कहते हैं जी. आज वहां पर साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर और जो मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है वो है 14.7 और पाकुड़ में 13.84 और ये जो जामताड़ा है जिसको साइबर क्राइम कैपिटल कहा जाता है वहां पर 8.84. यानी पूरे इलाके को भारत से काटने की योजना बन गई है. पीएफआई का हेडक्वार्टर फुलवारी कांड के बाद पता चल गया था कि पूर्णिया में बना हुआ है और उस क्षेत्र के अंदर जो खुद दिल्ली में एक व्यक्ति पकड़ा गया, व्यक्ति उसको वहां पासपोर्ट बनाने का काम और किशनगंज से हुआ है. ये सब पेपर में आ रहा है. तो ये सारे इलाके और आप जमीन नेपाल के नो मैन लैंड की बात मत करिए. मैं आपको बता रहा हूं, अभी 15 जुलाई को पटना हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है बिहार सरकार को जी. वहां के ट्राइबलों की जमीन को 2015 से और ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं ये आके उनकी जमीन कब्जा किए हैं, वो उनके तरफ से एक पीआईएल दाखिल हुआ और अभी 15 जुलाई 2022 को आदेश दिया है कि आप इनकी जमीन खाली कराइए. तो देश का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र, देश को फिर से तोड़ने का और ये इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ाने का ये सारा खेल चल रहा है नॉर्थ ईस्ट में. ये बिहार में ही नहीं, मैं आपको एक एक जिला जोड़ करके दिखा दूंगा कैसे ये बांग्लादेश को और पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा है जी. ये इनका आइडियल था, ये इनका गोल था. लेकिन बात ये है कि देखिए, भारत तो भारतीय मूल के लोगों के लिए है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी पंथ के हों, किसी भी पूजा पद्धति को फॉलो करते हों. यहाँ पर इलीगल्स को जगह क्यों दी जा रही है और कौन दे रहा है? खालिद अनवर जी नमस्ते.
आप क्या कहेंगे, ये प्रॉब्लम है कि नहीं है? नमस्ते। देखिए, नहीं आनंद जी, बहुत अच्छा इशू आपने उठाया है और अच्छे इशू पे बात हो रही है, बहुत अच्छी बात है। हरेंद्र प्रताप जी ने जो फिक्शन सुनाया यहाँ पे, जो कहानी सुनाई उन्होंने, एक गुमराह करने वाली, जिसकी कोई हकीकत नहीं, कोई बेस नहीं, बेसलेस बातें। यानी जैसे समाज में आग लगाने के लिए कोई आदमी कोई कहानी गढ़ता हो, कोई आग का दरिया बनाने की कोशिश कर रहा हो, इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। इनको पता ही नहीं है कि बिहार में इलीगल माइग्रेंट है ही नहीं, जीरो है। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां कोई माइग्रेंट आता नहीं है, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे नेपाली हो, चाहे कोई हो, सब बिहार के लोग हैं। 14 करोड़ बिहार के लोग हैं। अब इनको सीमांचल से बहुत परेशानी है, चूंकि वहां कहीं कहीं मुस्लिम आबादी ज्यादा है, इसलिए इनको बहुत परेशानी होती है। इनको लगता है डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। भाई, भारत के लोग, दिल्ली आजादी के वक्त दिल्ली में की डेमोग्राफी क्या थी? बहुत सारे, यानी किशनगंज का नाम ले रहे हैं आप, किशनगंज एक सेंटर हेडक्वार्टर है किशनगंज जिला का, और फला ब्लॉक में ये हो गया, चिना ब्लॉक, आप जाके पूछिए ना कहाँ के लोग हैं, कौन लोग हैं। आप ऐसे बैठे बैठे जो चाहे, जिसको चाहे, जिन बिहारियों को चाहे आप विदेशी बता देंगे और हम लोग सुनते रहेंगे। ये सब ड्रामेबाजी बंद कीजिए। इस तरह की गुमराहकुन प्रोपेगेंडा बिहार और बिहारियों के खिलाफ बर्दाश्त नहीं होगा साहब। हम लोग ऐसी आप किसी कह रहे हैं चीज कि को ये बर्दाश्त नहीं जो करेंगे। सेंसस आप डेटा जो को बातें स्टडी बता रहे हैं ना करके कह कि रहे हैं, रविवार की जगह जुमे की छुट्टी होती है, हाँ। आप जाके देख लीजिए। बिहार एजुकेशन पॉलिसी 1962 के अंदर बिहार की असेंबली ने पास किया था, बिहार एजुकेशन पॉलिसी, जिसके तहत छुट्टियां होती है बिहार में जुमे को, और सिर्फ कटिहार और किशनगंज की स्कूलों में नहीं होती है। रुके माफ कीजिएगा, आप बिहार के 4000 स्कूलों के अंदर छुट्टियां होती है। 1962 में बिहार एजुकेशन पॉलिसी नहीं, 2012 में कोई बॉर्डर से क्रॉस बॉर्डर नहीं आ रहा है। हाँ, तो सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। जो कुछ भी आप कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं खालिद जी, लेकिन मैं आपको कहूं कि 2012 में राज्यपाल ने, बिहार के राज्यपाल में तब नीतीश बाबू की ही सरकार थी, तब उन्होंने एक ऑर्डर पास किया था जहां पे उन्होंने कहा था कि जुम्मे के दिन छुट्टी नहीं होगी, सिर्फ लंबा अवकाश दिया जाएगा भोजन का, 12:30 बजे से 2:30 बजे तक, पर आपको वापस आना है, कोई छुट्टी नहीं होगी। ये राज्यपाल का नोटिफिकेशन 2012 का है। और ये सब, ये सुनिए अनिल, अभी मैं आपकी बात सुन रहा था, अब फैक्ट की बात सुनिए। अब ये उन स्कूलों के लिए है जो राज्य सरकार द्वारा चिन्हित या इंगित किए गए हैं कि ये उर्दू स्कूल है। यहां पर स्टोरी ये है कि पूरे इलाके में, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट स्कूल हो, हर स्कूल को बंद करा दिया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन आपने कहा कि ये आंकड़े झूठे हैं। सुनिए जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि बिहार में 4100 स्कूल हैं जहां जुमे की छुट्टी होती है, और बिहार की जो एजुकेशन पॉलिसी है, जिसको बिहार की विधानसभा ने 1965 में पास किया है, उसमें लिखा है कि उर्दू मीडियम स्कूलों में या ऐसे इलाके में जहां मुस्लिम आबादी, वहां के स्कूलों में जुमे के दिन छुट्टी होगी। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। उसमें 2012 की पॉलिसी में साफ लिखा है, 2012 में राज्यपाल का नोटिफिकेशन है। आप 62 की बात कर रहे हैं, 2012 की मैं बात कर रहा हूं, नीतीश बाबू की सरकार। अगर आपको नहीं पता तो फिर मैं क्या करूं? दूसरी, जैसे मैं कह रहा हूं ना कि फैक्ट पर गड़बड़ मत कीजिए। दूसरी बात, आपने किशनगंज की बात की, किशनगंज के आंकड़े ये बताते हैं कि ये हिंदू बहुल डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, अब वो मुस्लिम बहुल हुआ है। वो ये कह रहे हैं कि अगर ये भारतीय मूल के लोग हैं तो फिर जो नेशनल आंकड़ा है टोटल फर्टिलिटी रेट का, जो कहता है कि भारतीय मुसलमानों का जो फर्टिलिटी रेट है, ग्रोथ रेट है, वो हिंदू या किसी भी और समाज के बराबर ही है, उससे ज्यादा नहीं है। तो फिर ये कहां से आए? मुसलमान अपने आप से तो नहीं पैदा हुए। आप कह रहे हैं सब बिहारी हैं। हरेंद्र नाथ जी जवाब, अच्छा रुकिए, हरेंद्र नाथ जी और अविनाश को मुझे दोनों जवाब देना चाहते हैं। नहीं, हरेंद्र प्रताप जी, जो धर्मेंद्र आपके आंकड़े झूठ हैं, आप मिथ्या फैला रहे हैं। हरेंद्र जी रुकिए, खालिद जी उनको बोलने दीजिए। हाँ हरेंद्र जी, आपके सारे आंकड़े झूठे हैं। चैलेंज करता हूं, जिसमें भी हिम्मत हो मेरे आंकड़े को काट दे। ये बिहार सरकार का आंकड़ा नहीं है, ये नेशनल सेंसस का आंकड़ा है। मेरे पास सारी पुस्तकें हैं और इसको चुनौती देने के पहले लोगों को अध्ययन करके आना चाहिए मेरे साथ। मैं कोई ऐसा आदमी नहीं हूं कि मैं गलत कोई आंकड़ा। पूरा अध्ययन किया मैंने,
और कुछ किताबें जो आप लोग लिखते हैं ना आग लगाने के लिए, उन्हीं किताबों का वही किताब इन्होंने है। कोई किताब नहीं लिखी है, इन्होंने कोई किताब नहीं लिखी है। ये नेशनल ये सरकार का सेंट्रल सेंसस डेटा है। इसी तरह के बहुत सारे लोग हैं। आपको खुद 2012 के नोटिफिकेशन के बारे में ज्ञान नहीं है खालिद जी, आप किसी और को गलत ज्ञान ठहराएंगे। आंकड़े भी तैयार करते हैं, फर्जी आंकड़े तैयार करते हैं। देखिए, सत्य को झुटलाने से वो सत्य जो झुटला नहीं जाता, सत्य सत्य रहता है, तथ्य तथ्य रहता है, 14 आंकड़े झूठ नहीं बोलते। प्रतिशत मुस्लिम आबादी कैसे बढ़ गई, इसका उत्तर दीजिए ना। कि देश में 3.5% मुस्लिम बढ़ते हैं। अब मैं जरा बढ़ता है, बारसोई में 16% बढ़ता है। ये कौन लोग हैं? ये भारतीय नहीं, अभी खालिद अनवर का कहना है कि ये सब बिहारी है। क्या ये सब बिहारी है? अविनाश कनौजिया, देन तुहिन सिन्हा और पीके मिश्रा जी, आई विल कम टू यू। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। अविनाश कनौजिया, क्या ये सब बिहारी हैं या बाहरी हैं? मैं आप खालिद जी को एक बार अररिया भेज दीजिए, मैं उन्हें अररिया के बसमतिया में घुमा दूंगा। मैं उन्हें दिखा दूंगा कि वो साबित कर दे कि वो बिहारी हैं। तभी वे लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं, रोगनिया बसे हुए हैं यहाँ के। उनकी बोलचाल की भाषा, उनके बात करने की जो खालिद जी, इन्होंने आपको सुना, आप इनको सुनिए। कटिहार के हर ब्लॉक खालिद जी, आप मेरी बात, खालिद जी मैंने आपको बहुत विनम्र तरीके से मैंने आपकी बात को सुना, आप मेरी अब बात को सुनिए। मैं आपको ओपेन बता रहा हूँ, कह रहा हूँ, आप एक बार अररिया आइए, मैं आपके साथ जाके बसमतिया में आपको घुमा दूंगा और मैं उन लोगों से ला दूंगा जो बांग्लादेश आए हुए हैं। ये कैसे वहां पर आ गए, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है कि ये कैसे आ गए। तुहिन सिन्हा जी, ऐसा नहीं है। हाउ आर दीज पीपल हियर? जी ऐसा कुछ भी नहीं है। 2000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के अंदर ये आ गए। अब ये वहां पर अपना दमखम दिखा रहे हैं। 694 मस्जिद मदरसे 2 साल में बन गए। पैसे कहां से आ रहे हैं? आनंद, देखिए, वेयर आर द मनी कमिंग? एक बात और खालिद जी, आप हमको बताइए। एक मिनट, आप शांत हो जाइए, मेरी बारी है, अब आप लोग थोड़ा शांत होइए। देखिए आनंद, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं इस बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन के लिए। और जो आज भी इसको डिनाई कर रहे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इस देश में डेमोग्राफिक डिस्टॉर्शन जो है वो सबसे बड़ा खतरा है। और हालांकि अब तक जो है हम फोकस थे बंगाल पे। एक मेरी किताब आई थी 2012 में जिसमें किशनगंज का मैंने जिक्र किया था, लेकिन आज जब मैं आपकी इन्वेस्टिगेशन देख रहा हूं जिसमें कि 7 डिस्ट्रिक्ट से ग्रस्त है और लगभग 727 किलोमीटर के दायरे में ये चल रहा है। और सबसे इंट्रीगिंग और सबसे खतरनाक बात यह है कि वो राउंड अबाउट तरीके से सिलीगुड़ी से एंटर करते हैं, लेकिन फिर नेपाल जाते हैं। तो स्वाभाविक है कि वो कुछ 2-3 नाम भी रखते होंगे हर व्यक्ति चकमा देने के लिए लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को। लेकिन ये राजनीतिक संरक्षण के बगैर संभव नहीं है। आपको याद होगा, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, ये राजनीतिक संरक्षण के बगैर संभव नहीं है। आपको याद होगा पिछले इलेक्शन के दौरान अचानक सादुद्दीन ओवैसी उस एरिया में सक्रिय हो गए थे, 5 सीटें जीती थी। और कुछ ही दिन बाद उसके बाद उनके जो पार्टी के मेंबर्स हैं वो आरजेडी में उनका विलय हो गया था। तो ये आरजेडी की साजिश है, जैसा कि मैं आपकी एक और पैनलिस्ट को सुन रहा था। डेमोग्राफिक डिस्टॉर्शन के बगैर आरजेडी का कोई वर्चस्व नहीं है। उनकी पूरी पिछले 30 साल से जो MY फैक्टर है, M को बढ़ाने में वो देश की इंटरेस्ट को कुर्बान कर रहे हैं। देखिए, M अगर बढ़ रहा है अगर या मुस्लिम बहुल हो रहे हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं। अगर वो भारतीय मुसलमान है, ये तो भारतीय नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम इज दैट दे आर नॉट इंडियन सिटीजन। ये भारत के नहीं है, ये बाहर से आए हैं और यहाँ पर अपने आप को जमाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये वैसा हो गया है, अब ऐसा हो गया। अविनाश जी, पीके मिश्रा जी से बात करो। अविनाश जी से, ये ऐसा हो गया, पहले ये कहा जाता था, यहाँ दिल्ली में भी कई बार होता है, आप किसी को देखते हैं उसकी बोलचाल से लगता है कि ये भारत का नहीं है, बंगाली होता है, लेकिन बांग्ला नहीं बोल रहा है, कोई और भाषा बोलता है, उनसे पूछते हैं कहाँ से, बड़े हम मालदा से हैं, मुर्शिदाबाद से, तो आप समझ लीजिए कि भाई ये बांग्लादेश से आए हैं। अब ऐसा हो गया कि हम अररिया से आए हैं, सुपौल से आए हैं, ये भी बोलना शुरू हो गया। तो आपको समझ लेना चाहिए कि भाई ये कहाँ से आए हैं, ये भारत के हैं कि नहीं। प्रॉब्लम अविनाश इशू इज दीस पीपल आर नॉट इंडियन सिटीजंस बट दे आर पोजिंग एज इंडियन। इनको दस्तावेज कैसे मिलते हैं? हर बंगाली बोलने वाला बांग्लादेशी होगा, ये तो गलत बात है। ना सर, बोली देखिए, बोली से आप पहचान लेते हैं। बिहार में आप डायलेक्ट जिससे जैसे लहजा होता है पहचान लेते हैं कहां से आए हैं। बांग्ला में भी एक पर्टिकुलर सिलहटी डायलेक्ट होता है। जैसे ही सिलहटी डायलेक्ट आ जाता है, आपको पता है कि ये भारत के नहीं है। दैट इज अ रियलिटी, दैट्स अ रियलिटी। अविनाश, जल्दी, एंड देन आई विल गो टू पीके मिश्रा जी, इज वेटिंग पेशेंटली। यस अविनाश, बोलिए। जी आनंद जी, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। आप सीमांचल के अररिया में आप आके देख लीजिए, यहाँ दसमतिया साइड में बहुत सारे ऐसे नल लगे हुए हैं
बहुत सारे यहाँ चापाकल गाड़े गए हैं जो कि सऊदी अरब से फंडेड हुए हैं। आखिर क्यों वो बसमतिया या घुड़ना साइड या सीमांचल के साइड में क्यों लगे? उनको लगाने के लिए आप पटना में लगा लेते ना, पूरे गुजरात में पटना में लगा लेते। एम्बुलेंस घूम रहा है। अब प्राइम मिनिस्टर हमारे प्रधानमंत्री जी की कामयाबी है कि वो सऊदी अरब से गए, बहुत सारा पैसा लेकर के आए और गुजरात के देखिए अभी आप कुछ भी कहीं पर भी कोई भी आर्गुमेंट मत घुसाइए। पीके मिश्रा जी, I have limited time, but the last 2 minutes I'm going to give on the show. I'm going to give to PK Mishra ji, who's been very patiently listening. PK Mishra ji, you are former ADG BSF. I am asking you, sir, this is a serious threat. This is a problem. Why are our border forces not acting hard? We can clear out our no man's land, isn't it? Our side of the no man's land. Why can't we do it? Yes, Anand, I have heard patiently to all the political party members. I don't agree with the version that those who are there in that no man's land, they are Biharis. I can vouch. I have gone there also before 3 to 4 months. I have visited those Himachal areas. They are not, I repeat, they are not Biharis. I accept and I felicitate News 18, CNN News 18 to have gone and got a report on this issue. The government of Bihar and central government, they must wake up, and I can well tell that it's not only Bangladesh refugees and Rohingyas are entering from through Nepal via, paying the agents, but influx of drugs, influx of jihadis, influx of sleeper cells, influx of Jaish Muhammad, influx of Lashkar-e-Taiba, influx of ISI and AQIS. It's very easy, and I am telling you, Simanchal will give a problem to India like Bangladesh border is giving the problem. You see, it has become a vote bank. It is a vote bank politics. And how can, in no man's land, all these structures can come up? Yes. They have to be evicted. Though people, that some political leaders, they tell that it is very difficult. If the will is there, nothing is difficult. They have to be evicted from no man's land, and we have to find it out where from they managed and manipulated in getting the Aadhaar card and identity card and ration card, and who gave it, which party has given it, which government officer has given. This government officer should be suspended if it is found out. In fact, a lot of them, what they are doing is, they are doing it by hook or crook. They are also printing. Pata laga 5 Jamaatul Mujahideen Bangladesh, they were all born on the 1st of January. And their all location and address was given as Araria. So this has come to light recently. Sir, I have run out of time, but this investigation doesn't stop here. We are going to take on one more state. So Harendra Pratap ji and PK Mishra ji, I'm going to request you to join us again when we take on the next state, again where there is danger at the border. But that's coming up soon here as Investigation Part 2. I thank all our guests. We're going to take a very short break. When we come back, historian Dr. Vikram Sampath takes the right stand on Veer Savarkar. Stay with us.